Yes, Aital. Assalamualaikum class. Now open page number 39 and start reading. Yes, Aital. Yes, Aital. Yes, Aital. Yes, Aital. Turn on camera. Turn on camera. Friends, turn on camera, please. Okay, start reading. Drought excluders. Droughts can often be stopped. Aital, turn on camera. Droughts can often be stopped by fixing strips of plastic or foam around the edges of doors and windows. Strips which brush against the floor can be fixed along the bottom of the door. These are the broad blind. ये हमारे डोर्स की साइड्स पे लगते हैं. एक साइड फिक्स होती है, एक साइड मूवेबल होती है, जिससे हमारा डोर मूवेबल होता है. This lets them open and close up stop cold air blowing in under the door. Yes, these are the door excluders are very cheap and easy to fit. They make the house more comfortable and their pores can be covered very quickly. हम पढ़ रहे थे कि हमें कैसे एनर्जी की सप्लाईज को कंजर्व करना चाहिए जहां जहां पे बहुत ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं. हम ये रीड आउट कर रहे थे. ये भी इसका एक एडवांटेज है कि हम लोग इसको यूज करें ताकि हम लोग सर्दी से बच सकें और हम अपनी एनर्जी को कम यूज करें, हम अपने गैस सप्लाईज को कम यूज करें. Either you have to read this hot water cylinder jackets. Turn on camera. दुआ. 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 Then turn on camera. Yes, teacher. Turn on better camera and start reading. Water cylinder jackets, Saria. Okay, teacher. Yes. Turn on camera. In houses, hot water is usually stored in a copper cylinder. Copper is a very good
conductor of heat, so the cylinder loses heat very quickly, especially in cooler climate. Test dimension heater or boiler then has to heat the water again, covering the cylinder with a thick jacket filled with insulating material slows down the heat loss and so saves fuel. The cost of insulating the hot water tank can be recovered in few months. Yes. In this paragraph, Jan, turn on camera. Yes. No turn off camera. Okay. Four photo slender jackets. These are the jackets which we wear, which have some hot slenders that we have to wear in the cold time. इसमें क्या होता है कि कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इस सिलेंडर में कॉपर के सिलेंडर होते हैं और जो कॉपर है वो हीट बहुत ज्यादा कंडक्ट करता है, इसलिए इसको सिलेंडर्स में यूज किया जाता है ताकि ये ठंडे इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल हो सके. The immersion heater or boiler then has to be heat the water again, covering the cylinder with a thick jacket. ये देखें, ये जैकेट है, यहाँ पे ये सिलेंडर है, यहाँ से इसको हम कवर इसलिए करते हैं ताकि इसमें से हीट लॉस ना हो, हीट बाहर ना जाए और ये अंदर ही सेफ रहे, इसीलिए हम इसको ठंडे इलाकों में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है. ओके. Okay, now open page number 40. Okay. Now open page number 40. Start reading then. Renewable energy resources. Renew कर लेते हैं एनर्जी को, यानी दोबारा से उसको renew कर लेते हैं. Start reading then. Because fuels will eventually run out, scientists are developing other energy sources that do not use fuels taken from the environment called alternate, alternative energy sources. They use natural sources such as the sun, wind. These are called renewable energy sources because they will be able to energy for millions of years. Yes. Renewable energy resources का मतलब है कि हम लोग अपने जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं हम उसको रीन्यू कर लें, हम उसको वेस्ट ना होने दें. फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जब खत्म हो जाएंगे, बिकॉज फॉसिल फ्यूल जो है ना, साइंटिस्ट आर डेवलपर जनरेटिंग द एनर्जी सोर्स दैट वी डू नॉट यूज फ्यूल्स टेकन फ्रॉम द अर्थ कॉल्ड अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज. उन्होंने कहा है अगर हमारे जो नेचुरल फ्यूल्स हैं अगर वो खत्म हो जाएंगे तो फिर इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा है कि वो एनर्जी रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव मेथड से निकालें ताकि उनके पास अगर वो फिनिश भी हो जाए तो उनके पास ऑल्टरनेट हो एनर्जी के रिसोर्सेज का, ताकि वो एनर्जी को यूज कर सकें. ओके, स्टार्ट रीडिंग जवेरिया. स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम विंड पावर. जवेरिया, स्टार्ट रीडिंग. जवेरिया. जैना. Yes, teacher. जवेरिया, स्टार्ट रीडिंग. टीचर कहाँ से? विंड पावर.
Wind turbine can be used to drive electric. Yes, टीचर Imran. पेज नंबर कौन सा है? Page number 40. Okay, Zain. Yes, teacher. Just start reading from wind power. Wind turbines can be used to drive electricity generation. However, strong the energy is not easy. Electricity is only produced when the turbines are rotating. Large wind farms, large numbers of wind turbines in one place can be built in windy location on land and out at sea. The electricity can then be fed to homes and to industry when the wind blows. Other types power stations could be produce less electricity and so burn less fuel. Yes, wind powers. Wind turbines can be used to derive electrical generators. जितनी तेज हवा चलती है वहां पे उन्होंने एक टर्बाइंस लगाए होते हैं, वो इस जनरेटर से इलेक्ट्रिक जनरेटर्स उन्होंने लगाए होते हैं ताकि वो इस विंड्स को भी यूज कर सकें और एनर्जी रोटेट कर सकें. However, storing the energy is not easy and electricity is not produced when the turbines are rotating. जब टर्बाइंस रोटेट कर रहे होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. Yes, Marish. Yes, Marish. Yes, Marish. Yes, Zainab. The electricity can then be fed to homes and to industries. These are the turbines. These are the turbines. When the wind is blowing, turbines are rotate and electricity is produced. This is called wind power. Yes, Zainab. Okay, Zainab. Zan. Yes, teacher. Then start reading from hydroelectric power. Fast, fast flowing water can be used to drive turbines in hydroelectric power station. When the demand for electricity is high, water is released from a high reservoir as it flows down through pipes. The water loses height and and flows faster than the water passes through the turbines rotate, driving generations produce electricity. Hydroelectric power stations have proved very successful in some parts of the world, such as Scandinavia and North America. But they are expensive to build. It has often necessary to change. टीचर नीचे कर दे थोड़ा सा.
the surrounding countryside by building dams and diverting rivers. This may flood farmland and people may have to be moved from their homes. Okay, hydroelectric power. Hydro means water and electric means electricity. आपने सुना होगा कि हमारे ये जो डैम्स हैं पाकिस्तान में उससे बिजली बनती है क्योंकि पानी बहुत स्पीड से वहां से आता है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे जनरेटर्स ऐड किए होते हैं, टरबाइन रोटेट करते हैं बहुत हाईली स्पीड से, फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कोई पावर कोई फ्यूल हम लोग पानी से भी हासिल कर सकते हैं। पानी मीन्स हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू वाटर। ओके स्टार्ट। ओके फातिमा, start trading with solar energy. Start trading with solar energy. The solar energy start. The earth gets more. टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay. Javeria. Solar energy. The earth gives more than Javeria. yes, Read loudly. the earth gets more than new energy from the sun to meet all its energy needs. Human energy wonder men have been to bring. Okay, stop Javeria. Okay. Solar energy. Solar means sun. Solar means sun. The earth gets more than energy from the sun. The energy that we get from the sun is known as solar energy. The energy that we can get from sun is known as solar energy. हम लोग सूरज से भी बहुत ज्यादा एनर्जी लेते हैं। Solar panels. How can we get solar energy from solar panels? Then start reading. Then start reading. Yes, teacher. Yes, then. Teacher, number 1 solar, number 2 solar. हाँ जी, solar panels. You have to read solar panels. Okay. Solar panels are located on the roofs of buildings and use energy from the sun to heat water. Solar panels are very useful in parts of the world where the sun shines nearly every day. They are less useful in countries in colder climate zones such as the UK. Yes, solar panels are located in the roof of the building and use energy from the sun to heat water. Solar panels are very useful in the parts of the world where the sun shines nearly every day. They are less useful in the countries in cooler climate zones like as UK.
सोलर पैनल्स कहाँ पे होते हैं? ये हमारी छतों पे लगते हैं ताकि एनर्जी को ये ट्रैप करें, सन की एनर्जी को ट्रैप करें और फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करें। जहाँ सन ज्यादा निकलता है ये वहाँ बहुत यूजफुल है, जहाँ सन नहीं इतना निकलता, लाइक कोल्डर एरिया लाइक यूएसए, इंग्लैंड, ये वहाँ पे इतना यूजफुल नहीं है। सोलर वोल्टिक सेल, solar voltaic or photovoltaic cell produce a very small amount of electricity when light shines on them. These are the also produce electricity when they shines by the sun. This means that the large number of solar cells are needed to produce useful electricity. Satellites obtain their energy from solar voltaic cells. Solar voltaic cells कौन से होते हैं? The cells, these are the specialized cells which can trap the light and produce electricity. Now open page number 42. Okay, Zan, start reading and turn on camera. Okay, Zan, start reading. Power from the sea. कि हम समंदर से कैसे एनर्जी को बनाते हैं? The sea is constantly moving and there is a lot of energy in waves. There are a of ways that energy can be generated from moving water. One Yes. tidal bridge, Tidal bridge, barrage. tidal barrage. A Yes. tidal A tidal power station is built on a long barrage called a tidal barrage. Across the mouth of an tidal river that ostensibly water flows from the river through the turbine in the barrage. Electricity is produced and the water is trapped. Water is released to flow back through the turbine, producing more electricity. Tidal barrages are very पीछे कर दे What is हाँ tidal barrage? Then हाँ अब आपने बेटे कैमरा ऑफ नहीं करना अपना, ओके? ठीक है Yes. Tidal barrage. Tidal power station is built on a large long barrier called a tidal barrage. टाइडल पावर स्टेशन जो होते हैं वो टाइड्स से मिलके बनते हैं। टाइड्स कौन सी होती हैं? जो समंदर से लहरें आती हैं बहुत तेजी से, उसके थ्रू वो जब टरबाइंस लगा के, मोटर्स लगा के, वो जब उन टाइड्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं टाइडल बैरेज. Electricity is produced and water is trapped. Water is released to flow back through the turbines, producing more electricity. Yes, there are the turbines are fixed in the tidal barrage that tidal so that the electricity is produced in these barrages and then the water is trapped. Tidal barrages are very expensive to build. बहुत महंगे होते हैं ये, और ये वहीं पे बनते हैं जहाँ पे दरिया और समुंदर है. Now start reading wave power. wave power could also be used to generate electricity. One idea to use huge generation with generators which would move up and down with the waves. The movement drive the generators and produce electricity. Working models have been made. It will be many years before full size wave power generators are built. Yes, waves. Waves आपको पता है लहरें होती हैं, waves. Waves can also be, मैं आपको बता चुकी हूँ टाइडल बैरेज में कि जो पानी है उसकी वेव्स के थ्रू, उनके प्रेशर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ये सारे मेथड्स हैं कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट कर सकते हैं. नाउ मूव थर्ड, जियोथर्मल एनर्जी.
Yes, start reading geothermal energy. Heat from the hot rocks below the Earth's surface can be used to heat water. Water is pumped down tubes which pass deep. When the Earth crust it returns into to the surface. A hot water or drink which is hot enough to heat buildings or power turbines and power stations. Okay, geothermal energy. Geothermal heat from the hot rocks. आपने पढ़ा है रॉक से भी हीट हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी रॉक से जियोथर्मल ज्योग्राफी के थ्रू heat from the hot rocks below the earth's surface can be used to heat water. Water is pumped down tubes which pass deep within the earth's crust. It turns to the surface as hot water to steam, which is hot enough to heat buildings or power turbines in power station. इसमें है geothermal energy में how can we get energy? Heat from the hot rocks below the earth's surface. अर्थ सरफेस के नीचे जो हमारे रॉक्स हैं वहां से हम हीट लेते हैं हीट वाटर ये देखें वाटर कोल्ड वाटर इज पम्प डाउन ठंडा पानी पंप किया जाता है नीचे यहाँ से गर्म होकर वो दोबारा अपने स्टेशन में आ जाता है इसके थ्रू हम लोग अर्थ के थ्रू भी अपनी एनर्जी को ले सकते हैं एनर्जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स ओके स्टार्ट रीडिंग Energy from living things. Green plants have been trapping energy from the sun for millions of years. They use the energy to make sugar from carbon dioxide and water. The process is called photosynthesis. There are a number of ways of releasing the energy in plants, so we can think of plants as renewable energy sources. यस एनर्जी फ्रॉम लिविंग थिंग्स हम एनर्जी कैसे गेट करते हैं लिविंग थिंग्स से हमें पता है सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जितने भी प्लांट्स हैं वो एनर्जी सन से लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विच प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस Biomass. Biomass is short from biological mass, so it is a word that applies to all living material. Wood is a renewable fuel in well and arranged forest. New trees are planted as others are cut down. Growing plants and animal waste produce that energy. The energy is released by as they digest the plant matter. Ingredient. ओके बायोमास बायोमास इज अ शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकल मास इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मास सो इट इज अ वर्ड that applies to all living materials. Wood is a renewable fuel. वुड क्या है हमारा रीन्यू हो सकता है हम वुड को जलाते हैं वो दोबारा वुड की एक फॉर्म में कोल की फॉर्म में आते थे जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं इट विल मैनेज फॉरेस्ट ये कुछ हमारे जो प्लांट्स हैं वो जब जल जाते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं इसी के थ्रू हम लोगों की दिस बायोगैस जनरेट्स प्रोड्यूस मीथेन फ्रॉम काउस स्लरी जितना भी वेस्ट होता है एनिमल का उसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं लाइक मीथेन
Okay, now fermentation. Start reading with fermentation. The sugars made by plants can be charged into alcohol by using yeast. The process is called fermentation. Alcohol be burned and so it can be used as fuel in some parts of world. For example, Brazil, special crops such as sugar cane are grown specific, specifically to make alcohol. Sugar cane grows very quickly and the sugar content is very easy to ferment. The alcohol produced is mixed with petrol and used by cars, lorries. Okay, class, it's enough for today. We will start reading fermentation in the next class. So you have to put the date on page number 44. On page number 44. And we have to do book work in the next class. You have to be prepare your pencils and your notes for your book work in the next class. Okay. Thank you so much, class. Allah Hafiz.